Hello everyone, welcome to SmartLearn. Today's topic is what is C tokens and their types. Before that हम जानेंगे C tokens होता क्या है, उसके बाद उसके कितने टाइप्स है ये हम देखेंगे. Now start from what is C tokens. C tokens होते क्या है ये हम जानेंगे. C tokens are the smallest unit of C program. It's mean सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी टोकन्स प्रोग्राम का एक पार्ट माना जाता है. अब ये पार्ट क्यों माना जाता है ये हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में. पॉइंट नंबर 2, द कंपाइलर्स ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट. मतलब हम जो प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद जब हम रन करते हैं तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम के हिस्से करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंपाइलर डिवाइड्स अ प्रोग्राम इनटू 6 पार्ट्स. दिस इज अ 6th type of C tokens. This is all about what is C tokens. In next slide we will discuss 6 types of tokens. Now this is a diagram of C tokens. This is a 6 parts of C tokens: keywords, operators, string, constants, special characters, identifiers. This is all 6 type of C tokens. हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. अब ये प्रोग्राम कैसे डिवाइड करता है कंपाइलर हम जानने वाले हैं. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ C tokens, that is keywords. Keywords have fixed meaning and that meaning cannot be changed. It's mean C लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स प्रीडिफाइन किए गए हैं जिसका मीनिंग पहले से फिक्स होता है, उसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कीवर्ड्स इज हेल्प टू क्रिएट प्रोग्राम. कीवर्ड्स प्रोग्राम बनाने में हमारी मदद करते हैं. विदाउट कीवर्ड वी कांट डू एनी प्रोग्राम. पॉइंट नंबर 3, देयर आर अ टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज. कीवर्ड्स है लेकिन 32 कीवर्ड्स जिसका मीनिंग पहले से ही प्रीडिफाइन है इन सी लैंग्वेज. पॉइंट नंबर 4, दिस इज वेरी IMP. ऑल 32 कीवर्ड्स रिटन इन लोअर केस. प्रोग्रामिंग में जब हम कौन सा भी कीवर्ड यूज करेंगे वो हमेशा के लिए लोअर केस में ही लिखा जाता है. नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स: फॉर, डू, गो टू, व्हाइल, INT, कैर, एक्सेट्रा. दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल 32 कीवर्ड्स विच मीनिंग is predefined in C language or C++. This is all about keywords. In next lecture we will do program by using keywords. Next one is what is identifier. This is the second type of tokens. An identifier is nothing but a name assigned to an element in a program. मतलब identifier हम किसी element को दर्शाने के लिए यूज करते हैं. For example, my channel name is SmartLearn. SmartLearn is a identity of my channel like this. Point number 2, identifier are used to define a particular element in a program. मतलब कुछ एलिमेंट दर्शाने के लिए हम आइडेंटिफाई यूज करते हैं. लाइक एग्जांपल, मुझे प्रोग्राम में 10 वैल्यू लिखनी है तो मैं डिफाइन करूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिफायर x is equal to 10. मतलब 10 is a value and this 10 is identified like this. Point number 3, each identifier must have a unique name. मतलब आइडेंटिफायर का नेम रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम शो एरर. दिस इज ऑल अबाउट identifiers. Now there are some rules. Following rule must be followed for identifiers. Number 1, the first character must always be alphabet or underscore. मतलब जब भी हम आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे तब स्टार्टिंग अल्फाबेट से होनी चाहिए rather than upper case or lower case. Otherwise we can start with underscore. Point number 2, it should be forms using only letter, number or underscore. This is a combination of identifier. मतलब आइडेंटिफायर में हम सिर्फ लेटर्स, नंबर या अंडरस्कोर, इसके अलावा सिंबल्स नहीं लिख सकते, अदरवाइज प्रोग्राम शो एरर. नंबर 3, a keywords cannot use as an identifier because the meaning of keywords is already predefined in C language. Point number 4, it should not contain any white space character. Meaning of point number 4 is identifiers में space invalid है. मतलब like smart space learn. This is wrong. You can see point number 6. I will show you how to write identifier underscore smart learn. Next one is XYZ like this. This is all about rules of identifiers. Next one is operators. First we will know what is operators. Point number 1, an operator is a special symbol. Operators means this is nothing. This is only a symbol. For example, plus, minus, multiplication, division like this. Point number 2, this symbol is used to perform special मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन. मतलब हमें जब कुछ कैलकुलेशन करने होते या फिर लॉजिकल कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ
करने होते तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 एग्जांपल प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, मॉड एक्सेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। दिस इज थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ tokens. Name of that part is string. What is string? String is an array of character. मतलब we can store more than one character. It means we can store names, sentence like this. Point number 2 by using string we can use any sentence like as character. मतलब जब भी हमें कोई सिंगल वर्ड से ज्यादा नेम डिफाइन करने होंगे, फॉर एग्जाम्पल x is equal to smartlearn, then we will use string. In next session I will show all example with practical. Number 3 to represent a string a set of character are enclosed with double quote as shown in figure. मतलब जब हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तब डबल कोट के अंदर ही डिफाइन करनी होती, अदरवाइज प्रोग्राम शोज एरर। पॉइंट नंबर 4 एग्जांपल ब्रैकेट इन डबल कोट और सिंगल कोट स्मार्ट अंडरस्कोर लर्न लाइक दिस। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग. दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग. Our second last type is constant. Before that we will know what is constant. The constant is a value that should not be changed by the program execution. मतलब पूरे प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करते हैं या कर सकते हैं by using const keyword. This is the meaning of constant. Like const x is equal to 10. मतलब पूरे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तब x की वैल्यू 10 ही होगी. It never be change any condition and we can convert any data type in constant by using const keyword. In future I will show how to use const keyword and make constant. The last one is what is special character. Point number 1 a special character is one that is not considered a number or letter. For example symbols, exclamatory mark, punctuation etc. These consider as a special character. For example at the rate, or gate, exclamatory mark, punctuation mark etc. This is all about C tokens. In next lecture I will show practical of all this type, how to use keyword, constant, special character etc. So don't forget to subscribe, like and share my channel.